I now invite Director of Pratidin Media Network, Mr. Rishi Borwa, to moderate, and before that, felicit him. Thank you. Over to Rishi Borwa. Good afternoon, everyone. So you are the Commerce and Industry Minister of the fastest growing economies of the world. Does it make your job any easier or it's more difficult? Rishi, every job is easy, but at the same time, when you want to do a good job, you have to put in a lot of effort, and therefore, no job is easy. I think it's a wonderful opportunity to serve the nation. We are not the world's fastest growing large economy for any other reason except that we have a decisive leader in Prime Minister Modi. We have young India, of which we are very proud, our young boys and girls, men and women, full of talent, full of aspiration, enthusiasm, who work hard, work sincerely to take India to greater heights. Our farmers, our technicians, our workers, our startups, our Vishwakarmas, everybody is working for a better future for 1.4 billion Indians. And that strength that 140 crore Indians bring is what is driving this country forward. I have no doubt that in the coming 22 years in the Amrit Kal, by 2047, when we are celebrating 100 years of independence, India will be a $30 trillion, $35 trillion economy. And to meet that target, of course, there's a lot of work to be done by all of us, as much as your job is difficult, because you have to be the torchbearer of that positivity. My job is difficult because I have to make sure that we make it easy to do business. We earn the trust of the world. We grow our international and domestic business. So every job is fun. Every job is tough. Sir, jumping directly to retail inflation, which is hovering around 5%, and which is far better than the previous governments, I must say. But sir, an Aam Aadmi is still paying 850 rupees for a cylinder, gas cylinder, and 100 rupees for diesel or petrol. क्या आपको सही में लगता है कि ये रिटेल इन्फ्लेशन जो कम है उसका फायदा आम आदमी तक पहुंच रहा है? आप देखेंगे कि पिछले 4 या 5 साल में पेट्रोल का दाम 1 रुपए नहीं बढ़ा है. मेरे ख्याल से भारत में जो इन्फ्लेशन रेट है आज के दिन तो 2% है. लास्ट मंथ का फिगर परसों ही आया है, 2% इन्फ्लेशन रेट है. पर ओवरऑल भी आप प्रधानमंत्री मोदी जी के 11 वर्षों का इन्फ्लेशन अगर आप देखें, महंगाई देखें, तो भारत के आजादी के बाद 77-78 वर्षों के इतिहास में सबसे कम महंगाई अगर कभी रही है तो ये 11 वर्ष का दौरान रही है. मुझे लगता है कि महंगाई को नियंत्रण में रखना, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, हैज बीन अ प्रायोरिटी ऑफ दिस गवर्नमेंट. पिछली सरकारों का इन्फ्लेशन आप याद करो तो मुझे याद है एक जमाने में तो कांग्रेस के रूल में 25-27% तक इन्फ्लेशन चला गया था सालाना. You're right, sir. बहुत दूर नहीं जाए तो 2012, 13, 11 की देख लो, जब यूपीए की कांग्रेस की सरकार थी, राहुल गांधी जी और श्रीमती सोनिया गांधी जी उसको चलाते थे. थोड़ा रिमोट कंट्रोल से चलाते थे पर चलाते तो वही थे. उन्होंने उनके टाइम पे डबल डिजिट इन्फ्लेशन होता था. तो मुझे लगता है कि 2014 में ही
माननीय प्रधानमंत्री जी ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर सख्त ये जिम्मेदारी दी थी कि भारत में महंगाई को नियंत्रण में रखना, कंट्रोल करना, कम रखना, ये आरबीआई की मैंडेटरी लीगल जिम्मेदारी होगी। पहले की सरकारों ने कभी ये नहीं किया। और चाहे सरकार हो चाहे रिजर्व बैंक हो, दोनों मिलके फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी द्वारा इसके ऊपर नजर रखे हुए और महंगाई सामान्य व्यक्ति को तकलीफ नहीं दे, उसके लिए हम लगभग एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हम लगभग हर महीने मिलके हर एक चीज की रोजमर्रा की जो लोगों की जरूरत है उसके दामों पे चिंता करते हैं और फास्ट एक्शन करते हैं। Sir, India is now the fourth largest economy in the world with a GDP of around $4.19 trillion, which is ahead of Japan too. So, but our economy is definitely rising. Then why is the rupee still falling? We are at 88 against the dollar. एक आम आदमी के लिए सही बात। पूरी डॉलर दुन- वर्सेस फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी जो दावा करते हैं हम लोग, तो इसमें अंतर क्या है और क्या है? हम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बेशक है और इसमें कोई आपको डाउट करने की आवश्यकता नहीं है। तो आईएमएफ के फिगर्स होते हैं और भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। पिछले क्वार्टर में 7.8% बढ़त हुई है, विकास दर 7.8% था। जहां तक रूपी डॉलर पैरिटी का सवाल है या एक्सचेंज रेट का सवाल है, लगभग पूरी दुनिया में जो अनिश्चितता का काल चल रहा है, अनसर्टेनिटी है, जो वोलेटिलिटी है, हर जगह एक कंफ्यूजन है पूरे विश्व में। उस परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए लगभग सभी इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज की करेंसी वीकन हुई है गत कुछ महीनों में। ये ज्यादा इसी साल हुआ है, लास्ट 8-10 महीनों में ही ज्यादा करेंसी भारत की डिप्रिशिएट की है। और उसका कारण लगभग सभी लोग जानते हैं कि ये वोलेटिलिटी और अनसर्टेनिटी जो इकोनॉमीज में पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन में, उसके कारण है। मेरा मानना है कि ये थम भी जाएगा, सुधर भी जाएगा जैसे जैसे चीजें थोड़ी स्टेबलाइज होती हैं। Sir, MSME nearly generates around 30% of, contributes 30% of India's GDP and employs crores of people. Today, a startup founder with a PowerPoint presentation gets more attention than an MSME worker, an MSME owner with hundreds of employees. So, is the policy falling for the pitch deck over the production deck? MSMEs are the backbone of India's economy, and we really respect all the hard work that our micro, small, and medium enterprises are doing. I myself started my career when I was only 17 years old. I've heard about it. In As a Dombivli, small right? scale, in those days, MSME was not the word. They used to use small scale industry, if you remember. I started with a small scale unit at a total investment of 19,40,000 rupees. That So was I your think you can rest assured that we are all very conscious of the very important role that MSMEs play. We have been continuously coming up with various programs to support MSMEs. You saw in COVID how we ensured that MSMEs get adequate credit. They don't get categorized as non-performing loans. They get longer period to repay their loan, and they get additional working capital through government guarantees. So MSMEs did not have to provide collateral or keep any security. The government was the security. And even recently, we have come up with ideas, given the very changing international dynamics, around which we are focused on trying to see how we can support MSMEs overcome the challenges. Certainly, there's a lot we can do in terms of ease of doing business. I would in fact request Pratidin to run a campaign in all of Northeast to source ideas. We want ideas from all of you.
what government can do to make it easier to do business. How we can make the life of a common man better and easier, improve his quality of life for ease of living, and how we can support MSMEs or any industry, big or small, through less compliances, decriminalizing laws, reducing the burden of policy or process or procedure. If Pratidin can run a campaign and give us specific suggestions, I think I'll be very grateful to you. Definitely, we'll take into consideration. We'll get back home and try to do something about it, sir. Coming to GST, recently GST rates were reduced on essentials like ghee, dairy products, namkeen, baby diapers, tractors, feeding bottles, sewing machines from 12% down to 5%. Well, that's a welcome relief. क्या आप ये इंश्योर कर सकते हैं ये जो 7% का GST कटौती हुआ है ये आम आदमी का 7% का मुनाफा होगा और उद्योगों का 7% का प्रॉफिट मार्जिन नहीं बढ़ेगा उससे? सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि इतना व्यापक बदलाव इनडायरेक्ट टैक्सेस पे उन्होंने 3 सितंबर को जो किया, उससे सामान्य व्यक्ति के जीवन में लगभग हर एक आइटम जो रोज लगता है वो सब सस्ता हो जाएगा। वैसे तो आस्ते आस्ते लोग भूल जाते हैं पुराने दिन, लेकिन आप याद करिए 2017 के पहले 35 लगभग अलग अलग टाइप के टैक्सेस, ड्यूटीज, लेवीज लोगों को परेशान करते थे। हर एक जो छोटा बड़ा व्यापारी था या उद्योग चलाता था उसको कितने फॉर्म भरने पड़ते थे, कितने अलग अलग इंस्पेक्टर आते थे। जो थोड़े हम में से पुराने लोग हैं, आपको याद होगा एक सी फॉर्म होता था, जब ही सामान को एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाना, वो सी फॉर्म वो सच है हेडेक कि मुझे लगता है सालों साल कोई 6-8 साल पुराने का एक छोटा सा सी फॉर्म बचाओ, सेल्स टैक्स ऑफिसर जीना आराम कर देता। हर स्टेट के बीच में टोल नाके होते थे या चेकिंग नाका होता था कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कुछ सामान नहीं जाए। एक प्रकार से भारत में आजादी तो मिली थी, पॉलिटिकल यूनियन तो बना था भारत एक, लेकिन इकोनॉमिकली हम एक देश नहीं बन पाए थे। अपने अपने राज्य में व्यापार करते थे और एक राज्य से दूसरे राज्य का व्यापार ऐसा था जैसे कोई विदेश से व्यापार करना। ये जो टैक्सेस थे इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट था, कैस्केडिंग इफेक्ट था। एक टैक्स, जैसे आप फैक्ट्री में कुछ सामान बनाओ तो उस पर एक्साइज ड्यूटी लगता था, वो एक्साइज ड्यूटी पे करके माल निकालो तो सेल्स टैक्स सिर्फ सामान पे नहीं लगता था, सामान पे भी और उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी पे भी सेल्स टैक्स लगता। फिर उसको एक दूसरे प्रदेश में भेजो तो 4% GST लगता था जो कभी वापस नहीं मिलता था। वो 4% बेसिक मटेरियल, एक्साइज और सेल्स टैक्स तीनों के ऊपर लगता। और फिर अगर मुंबई में या दिल्ली में सामान आना है तो ऑक्ट्रॉय अलग लगेगा या एंट्री टैक्स अलग लगेगा। हर जगह चेकनाका, लंबी लंबी लाइनें, भ्रष्टाचार, अफसरशाही, वो इतनी मुसीबतों से लोग गुजरते थे। अब 8 साल हो गए तो शायद लोग भूल गए कि कितना कंफर्टेबल और इजी हो गया है कि एक ही टैक्स भरना है, कॉम्पोजिट भरना है। छोटे लोगों को 40 लाख रुपए तक के टर्नओवर जिसका है उनको तो एग्जेम्प्ट किया गया। 1 करोड़ रुपए तक का जिसका टर्नओवर है उनको सिर्फ 1% एक कॉम्पोजिट लेवी भरना है, कोई रिकॉर्ड नहीं, कुछ नहीं। तो वास्तव में GST को जहां लाखों करोड़ों लोगों को परेशानी होती थी, अब कुछ ही लोगों को रियली इसका पेपर वर्क अधिकांश करना पड़ता। सर्विस टैक्स भी उसके अंदर सम्मिलित हो गया एंड ओवर 8 years लगातार इसको सिंप्लीफाई किया, टेक्नोलॉजी को बढ़ाया, टेक्नोलॉजी को सुधार किया, रेट्स भी लगातार कम होते रहे। लगभग हर GST काउंसिल में कुछ ना कुछ रेट रैशनलाइजेशन और कम करने का प्रयास किए 8 साल में। 2018 में तो मुझे याद है 100 से अधिक आइटम को सस्ता किया गया। एक ऑफ द कफ अगर बताऊं तो सैनिटरी पैड्स
सैनिटरी पैड से जीएसटी हटा दिया गया। महिलाओं में बड़ा आक्रोश था उस समय। प्रधानमंत्री जी को पता चला, उन्होंने तुरंत मुझे कहा कि इसको, तब मैं थोड़े दिनों के लिए फाइनेंस देखता कि इसको खत्म करो ये जीएसटी को सैनिटरी पैड्स। प्रधानमंत्री जी बड़े संवेदनशील नेता हैं, व्यक्ति हैं, खुद बड़े हम्बल बैकग्राउंड से आए, तो लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों को सस्ता करना, उपलब्ध कराना, ये एक उनकी प्राथमिकता रही है। तो इस बार लगभग 1-1.5 साल से फाइनेंस मिनिस्ट्री माननीय निर्मला सीतारमन जी और उनकी टीम और राज्यों के फाइनेंस मिनिस्टर्स और उनकी टीम्स 1-1.5 साल से इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और इतना व्यापक बदलाव, आप अपने अपने दिनचर्या को देख लीजिए, आपको सुबह से रात तक जो भी सामान लगता है, लगभग हर एक चीज सस्ती हो रही। सुबह उठेंगे तो टूथपेस्ट हो, टूथपेस्ट से शुरू करके बाल में तेल लगाना हो, कॉस्मेटिक हो, कपड़े हो, जूते हो, पेन हो, घड़ी हो, चश्मा हो, 2 व्हीलर में जाना हो, 3 व्हीलर में जाना हो, गाड़ी खरीदनी हो, आपको हेल्थ इंश्योरेंस निकालना है, लाइफ इंश्योरेंस निकालना है। अब कोई चीज, खाने पीने के पदार्थों में तो सभी में कटौती की है, कई को शून्य कर दिया गया है। एक प्रकार से इतना व्यापक बदलाव, रेट रैशनलाइज किए, सिंप्लीफाई किए, शायद आजादी के बाद इतना बड़ा परिवर्तन मुझे नहीं लगता आज तक कभी हुआ है, जिसमें लाखों करोड़ का फायदा उपभोक्ता को मिलेगा, कंज्यूमर को, और उससे बिजनेस को भी ग्रो करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगी कंज्यूमर डिमांड बढ़ने से। आपने देखा होगा सरकार भी निगरानी रख रही है, हमने भी टीम्स डिस्पैच किए हैं देश भर में टू एंश्योर के जीएसटी बेनिफिट पास ऑन हो। हमने अपील भी किया है इंडस्ट्री और इंडस्ट्री एसोसिएशंस के माध्यम से, और आप रोज इश्तिहार देखते होंगे, अलग अलग सेक्टर कमिट कर रहे हैं कि हम पूरा जीएसटी पास ऑन करेंगे। और आप जैसे जो जागरूक मीडिया हाउसेस हैं, आप भी ध्यान रखेंगे, अगर कोई पास ऑन नहीं करेगा तो प्रतिदिन में हेडलाइन आएगी, आपकी हेडलाइन पढ़ के हम उस पर एक्शन लेंगे। तो हम सब मिलके इसको सुनिश्चित करेंगे, पर प्राइमरी जिम्मेदारी हमारी है, आप चिंता मत करिए, हम इस पे निगरानी रखेंगे, सरकार निगरानी रखेगी, राज्य सरकार भी निगरानी रखेगी कि उनका भी रेवेन्यू इसी में से बढ़ने वाला है डिमांड ग्रोथ से। तो हम मिलके सब लोग और आपकी भी सहायता लेंगे कि ये 100% जो बेनिफिट है नेट ऑफ इनपुट टैक्सेस वो पूरा पास ऑन होना चाहिए। So since हम Assam से हैं, so we'll talk about Assam tea for once. So Assam has some 1.34 lakh small tea growers who contribute around 45% of state's production and 22% of India's consumption. So production has fallen some 9% this year, and the leaf prices have crashed to 14 to 18 rupees per kilo. In Assam, there are some heavy compliances for tea industry, and while inferior quality, low-cost tea from Kenya, Nepal, Bangladesh are flooding the Indian markets. In 2025, Kenya exports tea to India has grown by 117%. Will the government step in to protect Assam's tea industry through stronger checks on tariff-free imports or measures to safeguard our world-famous Assam tea? सबसे पहले तो वैसे अच्छा आपने याद दिलाया, आज माननीय प्रधानमंत्री स्वयं असम में है, करेक्ट, और हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स, आज नए प्रोजेक्ट्स फाउंडेशन स्टोन ले किया है, हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स को आज देश को समर्पित किया है, असम के उज्जवल भविष्य के लिए तैयार हुए। हेमंत बिश्व शर्मा जी के नेतृत्व में और मोदी जी के मार्गदर्शन में जिस प्रकार से असम और पूरे नॉर्थ ईस्ट ने प्रगति की है, वो मैं समझता हूँ ऐतिहासिक है। शायद ही भारत के 75-78 वर्षों के आजादी के बाद नॉर्थ ईस्ट ने इतनी प्रगति देखी होगी जितनी गत 10-11 वर्षों में देखी। प्रधानमंत्री जी स्वयं 50 बार नॉर्थ ईस्ट गए, 50 टाइम्स, अब तो आंकड़ा बढ़ भी गया होगा। और पहले दिन ही उन्होंने हम सबको डायरेक्शन दिया था कि देश को आगे बढ़ना है
तो जब तक नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट इंडिया आगे नहीं बढ़ेगा, देश आगे नहीं बढ़ सकता. We need balanced growth of every nook and corner of the country. और नॉर्थ ईस्ट के ऊपर तो उनकी विशेष आग्रह रहता है. आप देखिए रेलवे अब लगभग हर स्टेट कैपिटल में पहुंच गई है नॉर्थ ईस्ट की. आप देखिए हाईवेज का नेटवर्क, जिस टाइप की आज रोड्स वहां पे बन रही हैं. पहले तो हम सिर्फ भ्रष्टाचार की कहानियां सुनते. मुझे याद है मैंने 2014 में जब पहले मंत्री बना, मेरे पास पावर था, ऊर्जा का क्षेत्र था. One of the first cabinet notes that was approved was a huge investment to upgrade the transmission network of Assam and Sikkim. और आज पूरे नॉर्थ ईस्ट में इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क को जो अपग्रेड किया गया है 10-11 सालों में, कितने सारे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को रीस्टार्ट किया गया. आप याद करिए कितने अटके पड़े थे. सुभानश्री भी अभी काम शुरू हो गया. करेक्ट. तो कितने प्रोजेक्ट्स लटके अटके फटके पड़े थे, वो सब रिस्टार्ट किए. और ईमानदार व्यवस्थाओं को नॉर्थ ईस्ट में लाने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया. ऐसे ही चाय बगान के लिए हाल में ही श्रमिक योजना, चाय बगान श्रमिक योजना, उनके बेहतर भविष्य के लिए, बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए 1000 करोड़ रुपए की अभी हम लागू कर रहे हैं. आजकल काम चालू है. राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलके लोगों के उज्जवल भविष्य के लिए काम कर रही है. कभी कभार चाय की प्रोडक्शन कम ज्यादा होना सीजनल भी है, पर मैं समझता हूँ आप पूरे लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखें तो चाय की प्राइसेस भी स्टेबल रही है. 14-18 तो नहीं है, आप तो डस्ट के प्राइसेस से भी कम बोल रहे हो. 14-18 रुपए किलो तो नहीं है. पॉजिटिवली मेरे पास रेडी आंकड़ा नहीं है, पर चाय का डस्ट भी इतने में नहीं जाता. और बाय द वे हमने ट्रांसपेरेंट ऑक्शंस को प्राथमिकता दी. पहले डस्ट चाय के कई चीजें ऑक्शन नहीं होती थी, वो प्राइवेट डील्स होती थी. तो मैं जब गया तो कई लोगों ने कहा कि ऑक्शन हो तो अच्छा है. मैंने ऑन द स्पॉट ऑर्डर किया. उसके बाद से प्राइसेस भी बढ़ी है, रिकवरी टू द स्मॉल ग्रोअर्स. कई लोगों ने ऑब्जेक्ट किया, जो शायद उसका नाजायज फायदा उठाते होंगे. पहले उन्होंने बहुत कोशिश की इसको अड़चन डालने की, लेकिन हिमंत बिश्व शर्मा का मुझे पूरा सपोर्ट मिला और मुझे खुशी है कि वो इम्प्लीमेंट हुआ है. उससे प्राइसेस बढ़ेंगी. रही बात ये इंपोर्ट की, ये एकदम गलत प्रचार दुर्भाग्य से बार बार किया जाता. बार बार नेपाल की बात होती थी, नेपाल से चाय आ रही है. हमने आंकड़ा देखा, इट इज नॉट इवन 1% ऑफ आवर रिक्वायरमेंट, नॉट इवन 1%. कीनिया का आपने परसेंटेज ग्रोथ देखा, लेकिन बेस देखिए कुछ नहीं है. कुछ ज्यादा चाय नहीं आती है वहां से. भाई अगर बेस छोटा हो, एक हो समझो, उस पर 114%, एक का 2 ही करते हैं, 100 नहीं हो जाता है. तो बेस देखिए जरा, आपको ध्यान में आएगा कि ज्यादा इंपोर्ट नहीं है. हमने निगरानी भी रखी है, चाय के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी भी ज्यादा रखी है. ये बात अलग है कि नेपाल एलडीसी है, लेस डेवलप्ड कंट्री, इससे उसको हम एक स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं. पूरी दुनिया देती है कि उनके लोगों को भी खड़े होने का मौका मिले. पर मैंने बहुत बार ये वेरीफाई किया है कि कई बार मेरे पास ये कंप्लेन आती है, पर नेपाल से कोई अनाप शराब ज्यादा संख्या में चाय नहीं आ रही है. आपको अगर कोई ऐसी जानकारी मिले, कृपया करके मुझे तुरंत सूचना करना. Sure, sir. Sir, now some tea gardens have shifted from tea production to tea tourism. You must have heard about it. So there are 3 things associated to tea tourism. One, we are losing focus on a product which has the potential to become a greater Assam's economic backbone. Number 1. Number 2, we are losing grounds on a product which will and always have a substantial market in the world. If we are more focused on tea tourism than tea production, sooner or later we lose the name and fame of Assam tea. So can a minimum sustainable price be introduced to help these small tea growers to avoid distress sales, or prioritize them for quality over, venturing into something else from the land bank which they have?
I say, when circumstances change, do you change or do you remain where you are? All across the world, take vineyards for example. Now, wine of the best quality is made in the vineyards where there is also wine tourism, vineyard tourism. Tourism is a supplement, it is not hurting or damaging your tea industry. If at all, some people are also promoting tea tourism, it will add to your economy. More people and hopefully international people also will get attracted. You can have competitions, you can have tea tasting sessions. I don't know, some of you may be aware when you go to Japan, there is a whole ceremony around the evening tea. Or in England, tea and what is it, macarons? Yeah. Right? So these are ways to attract tourists, attract economic growth, and attract people to your state. Now, once he comes and visits a tea garden, it's not as if he'll just visit a tea garden and come back. He'll stay in a hotel, he'll pay in a hotel, he'll eat in a hotel, he'll give jobs. The hotel will, and the dhaba and the restaurant will give jobs to our people in Assam. There'll be a tour guide who may take him to visit Kamakya temple or other parts of beautiful Assam. There will be an interest to maybe go and see the wildlife sanctuary, Kaziranga, or see the elephants. In fact, the European Union Trade Minister just left on Friday. Right. And I was telling him, next time come with your family, we'll take you to a wildlife sanctuary. So along with him, the agriculture minister was there. He said, I want to see elephants. And it suddenly came to my mind, I'll take him to Assam. So I think this is a supplement. Don't look at it as an alternate. And I also think that because of this, it will help you to, with greater income, help the tea gardens to spend more on quality upgradation, better productivity, better wages to their workers, and hopefully with that we'll overall be able to create a presence. We are one of the largest exporters of tea from India. But now we need to compete in quality because there are still a few countries whose teas are considered superior quality to India. A challenge that we have to take up, and Assam and West Bengal both will be at the forefront of this challenge along with some southern states. How can we make our tea the very best in the world? That should be our first priority. So we have always heard of making India, Northeast India as the gateway to ASEAN. We have talked about it, heard about it a lot of times, but in reality, it is still easier to export tea from Calcutta than Guwahati. So how do you look at it? Are we seeing any more progress on the ASEAN connectivity and making Guwahati the hub of export for tea? That's a very good suggestion. I think we'll need to work on it along with the state government, how we can open up the routes a little better. But I think there are some challenges in that because Myanmar and some of the countries that come on the way, The disturbed yeah, areas. they're disturbed areas. So that's why there are some challenges, and the tea goes again through the port area. Right. So, since we are talking about tea, there's another industry which is coming up very beautifully, the Tata Semiconductor unit. So, are we looking at exporting more semiconductor chips than tea in forthcoming years? This also shows you how much Prime Minister Narendra Modi believes in the talent, the skill, the capabilities of the young men and women from Assam. He, along with Himanta, promoted Assam as a future destination for the most difficult and most modern technology based industry. Semiconductors is probably the most important and most difficult industry in the world today. And we are all proud of Assam. You came out with an absolutely fabulous policy to attract the semiconductor industry. You now have a vibrant industry coming up there. I had attended the
the industry Advantage is Advantage Assam program. And I was amazed to see the interest that businesses from across the world have to invest in Assam. And looking at that, I see tremendous potential in the beautiful state of Assam. I personally am a big fan of Assam. I get the slightest opportunity. I love to visit your beautiful state. I like to go to the Kamakya temple to get the blessings of Ma Kamakya. And with the new infrastructure that I see coming up in Assam at a very fast pace, with the new industries that are coming up, with the new Unati scheme, by which the central government is also promoting the development of manufacturing and industry in all of Northeast, I have no doubt in my mind, Assam will power on. Assam will be known all over the world for its high technology production, high quality goods and services. Already in hospitality, for example, some of your people have done fantastic work. In caregiving or nursing, the Assamese people are respected all over the world. So the capabilities of the youth of Assam are just fabulous, fantastic. Thank you so much, sir. And coming to the Unati scheme, sir. So it's seen as a very big step for the Northeast India, but there's a cap on the incentives. So, but if one big corporate grabs the incentives, can we ensure the local businesses of Northeast with comparatively limited capital availability shall not be left behind? We have kept a very significantly large amount of money to give as incentives. We still have a lot of available funds. In fact, I would appeal to you again. Of course, you will think that I'm taxing you too much for coming to your conclave. No, Because I'm giving so much work to you, Pratidin. But I would appeal to you that please reach out to all the local people, speak about Unnati. If you run conclaves like this or industry interactions to promote Unnati with the local entrepreneurs, I will send my officers from Delhi to explain the benefits. I've come to Guwahati and had the Northeast Industry Association's engagements to speak about Unnati and promote Unnati. We would still like to have many more industries to come. There's no shortage of funds. I invite local people to set up big and small businesses. I don't think there's any fear of running out of funds. That question was from one of the industry men from Assam. He wanted to know if there's a cap, if big corporates come in with big investments, they'll take away the incentives. Why is he worried about the if? Tell him to start his business, we'll approve it right away. So there's one more thing we produce really well from all the northeastern states, it's the bamboo. So I think we have the 50% of the entire India's bamboo production. So can we move from, we are usually making tokeries and handicrafts, etc. Can we come out with some technological advancement that we move from tokeries and handicrafts to something bigger, which can create another economic backbone for the northeastern states? That's a very good question, Rishi, and my compliments to all of you for actually promoting the cultivation of bamboo in Assam, because it's something which comes up very fast. Exactly. And you don't need to use very arable land. You can use just the border of your land. You can use the non-cultivable land for bamboo, and it supplements the income of the farmers. Exactly. In fact, Prime Minister Modi is a big fan of promoting bamboo cultivation. He has come up with a bamboo mission also. I can actually help by sending a gentleman from Maharashtra who has set up a unit and is in the business of making everything that you could possibly imagine from bamboo. Shoes, clothes, watches, spectacles. He's made almost pen. Everything he has made from bamboo.
and high quality stuff. I remember he had come to meet me once with a bag, and it was, like that Santa Claus's bag. Taking out one item, and I would look at it and I would say, wow, that's nice. And I would say, this is from bamboo. Next item, this is from bamboo. So I think we need to run some programs or courses to educate our young entrepreneurs, our young boys and girls about the potential of bamboo and encourage them to do furniture, for example. A lot of possibilities are there. I run, as in our ministry, Commerce, runs the National Institute of Design. In Bengaluru, we have a campus. There also we have a dedicated unit developing new products of bamboo. And I'm happy to send them over to Assam so that you could introduce more awareness about what can be done with bamboo. Definitely, sir. As on today, after China, we are the greatest bamboo producers. But where half of the population is Hindu, हम लोग instant sticks का sticks भी China से मंगवाते. Largest economy, second अब वो गया, largest. वो वियतनाम से आता था पहले, उसको हमने बंद कर दिया कुछ सालों पहले. तो अब वो नहीं आता है. उल्टे अब मेरे को रिसेंटली कोई कह रहा था शॉर्टेज हो रही है अगरबत्ती स्टिक्स की, तो देवर सेइंग के वापस खोलिए. मैंने कहा नहीं खोलेंगे, अपना डोमेस्टिक यूज करो. सो यस, यू आर राइट, दैट्स अ बिग इंडस्ट्री एंड आई थिंक देयर इज अ ह्यूज एक्सपोर्ट पोटेंशियल आल्सो. आखिर आप सोचिए 4 करोड़ लोग दुनिया भर में मूल भारत के हैं. Indians who live all over the world, 4 crore Indians. Many of them use agarbattis or incense sticks. It's not only a question of religion. Even Christians use incense sticks. Exactly. So we are coming to the end, and I have a short myth or reality. I'll pass few statements. You need not explain, Vishal. Just open this water bottle. So I'll pass a few statements. You need not explain further. You just have to say if it's a reality or a myth. That's all. Plain. So the first statement is India and US is in a trade war. Myth. Make in India only benefits big corporates, not small businesses. Not only a myth, complete nonsense. The recent GST reform is a correction of a previous mistake. Absolutely a big myth. I can explain it, but chalo, go ahead. Assam's semiconductor plant is an assembly unit only. Today, a fact, but that's how this industry works. It starts with that and then does backward linkages. Okay. The retail prices are rising faster than salaries. A myth, I don't think so, because inflation is very much under control. Bureaucracy, not global competition, is India's biggest hurdle to growth. It's a myth. No. Northeast is still a promise, not a priority. Complete humbug. Myth बोलना तो बहुत light हो जाएगा. You are a strict, no-nonsense person who doesn't even joke in private. Really? Do I look like that? Okay. Rupee is more powerful currency than your wife's opinion. Rupee is a powerful currency than your wife's opinion. No, complete myth. My wife's opinion is most valuable. Rupee is also a valuable currency, but please don't bring the rupee and my wife on the... We are many of us here are happily married, and we are not going to take chances on this. So the famous Vande Bharat Express
was actually your idea. That's a myth. It was the Honorable Prime Minister's idea. It was started by the Prime Minister before I became the Railway Minister. The technological work, the development of that at the Chennai plant had started before I became Minister, I'll be frank. One engineer by the name of Mani was working on it. What I had the privilege of doing was only to fast track it. But the idea had started before I became Minister. And the first two trains we had started in 2019. Okay. When I was the minister, and then of course it continuously kept growing after that. But today it's a joy to travel, and I'm sure all of you have had the experience, and it makes you really proud as an Indian to travel on Vande Bharat. So the Prime Minister has a special nickname for you. I think no comment on that. You should ask the Prime Minister. Please complete these sentences for me. But I'm a very satisfied person, and I can tell you one thing. There can be no greater privilege than working for a decisive, hardworking, very, very emotional, sensitive, committed to every single person, committed to the upbringing of the poorest of the poor. Wonderful human being like Prime Minister Modi. It's a great privilege to work for. So please complete these sentences for me. In 2047, India will be A developed and prosperous nation. Viksit Bharat 2047. for Northeast India. I dream of A Viksit Northeast India at par with the best in the world. for Indian youth. My one message will be Be confident, be bold, aspire for the best, dream big, never get daunted by failure. Failure is truly a learning, nothing more. Maintain the cultural, traditional values that we are proud of as a nation, our family value systems, our respect for each other, our respect for humanity, our respect for nature, and most of all, work hard and persevere. Be a part of the India story with high integrity and ethics. Thank you so much. So this brings me end to another session with Honorable Union Minister of Industry and Commerce, Piyush Goyal ji. Thank you so much for your time. I hope you had fun here. Oh, it was absolutely wonderful, Rishi. Compliments to you. At a young age, you've really developed very, very well. And I wish you all the very best in your journey. Thank you so much, sir. Thank you so much. And now the customary photograph with. Give both of them a round of big applause. Thank you very much, sir. It was a brilliant one. Thank you, sir. As usual, Mr. Piyush Goyal is strong, sharp, and detailed. Let's now move across to another major issue that haunts every home and family in the Northeast India. That's dealing with cancer care and cure. Let us move on to the next panel. On this panel, we are honored to have, while subject is dealing with cancer